ओके मनीषा, वेलकम टू योर पीडिया। स्टार्ट करते हैं आपका फुल मॉक फॉर HPCL। यू आर Okay, फ्रॉम sir. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो Yes, sir. स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। Okay, sir. Thank you for the opportunity to introduce myself. Sir, my name is Manisha. I belong to the Alwar district from Rajasthan. I have done my schooling from hometown, and after that, I was shifted to the Ajmer city for pursuing electrical engineering from Government Mahila Engineering College, Ajmer. And after completion of 6th semester, I also have done summer internship from UIDAI project data center project from Maneshar. And apart from academics, I also a professional expert tutor on Course Hero platform for financial independency. And my hobbies are strength training, running, and reading books. That's all about me, sir. ओके, तो व्हेन डिड यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन B.Tech? Sir, in 2016. 2016. Yes, sir. And you are working as a subject matter expert, Professional like expert tutor on like freelancer job. freelancer job. Yes, sir. Okay, so what you teach basically? बेसिकली सर मैं टोटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ाती हूँ। उसमें क्वेश्चंस आते हैं, लाइक कोई क्वेश्चन आया लाइक नेटवर्क से, तो मुझे उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कन्वेंशनली राइट करके और फिर अपलोड करना होता है। ओके, यस सर। and your strength training, what is that strength training? लाइक वर्कआउट सर। Okay, workout. यस सर। Okay. Okay, Manisha, so you have been in the line of teaching. So have you not think about the going into teaching profession only to try it for नो MTech? सर, वो मैं बस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के लिए करती हूँ, क्योंकि उसके साथ मैं सेम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रिपेयर भी कर पाती हूँ और वो वर्क फ्रॉम होम ऐसे हो जाता है। ओके, तो यस। इसके अलावा भी कोई इंटरव्यू क्वालिफाई किया आपने? नहीं सर, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं किया अभी तक, ये फर्स्ट है। ये फर्स्ट है। ओके ओके मनीषा, व्हाट डू यू नो अबाउट द HPCL? और HPCL को, चलिए ठीक है, पहले थोड़ा HPCL का आइडिया दीजिए मेरे को, क्या आप जानते हैं? Okay, sir. HPCL is a reputed company who is working in electrical domain, and HPCL के बारे में इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, लाइक ये मार्केटिंग में भी है, सेल्स में भी है, एंड ऑपरेशन में है। और इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं लाइक LPG गैस, CNG, पेट्रोल, डीजल। सो बेसिकली ये रिफाइन करती है एंड मार्केटिंग करती है। अच्छा, आप तो स्ट्रेंथनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। LPG सिलेंडर देखा है आपने, कितना वेट होता है उसका? लाइक इसमें 3 तरीके के होते हैं। जो बेसिकली हम घरों में काम लेते हैं वो अप्रोक्सीमेट 14.2 किलोग्राम वेट होता है। खाली का? एंड यस सर। खाली का फुल? यस सर, खाली का। अच्छा, ओके। LPG मतलब LPG क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम। और CNG? साइनाइड नेचुरल गैस। साइनाइड? यस सर। सर मैं जितना रिकॉल कर पा रही हूँ, आई थिंक। ओके। अच्छा, अभी जो ये G20 के बारे में इंडिया में काफी कुछ चल रहा है कि G20 ग्रुप का प्रेसिडेंटशिप मिली है, तो ये क्या है बेसिकली G20 ग्रुप? आइडिया है कुछ? नो सर, सॉरी सर। अच्छा, न्यूज़ देखते इसका हैं मुझे करंट? थोड़ा ये आइडिया है कि लाइक इसमें प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऐसे करके 3 कंट्रीज होती हैं
फिलहाल प्रेजेंट में जो है वो इंडिया है, उसके अलावा 2 कंट्रीज और होती हैं। ओके, करंट में न्यूज़ देखते हैं आप? नो सर। अच्छा, अजमेर राजस्थान, HPCL की एक रिफाइनरी जो है वो राजस्थान में भी है, कुछ आइडिया है उसके बारे में? यस सर, एक रिफाइनरी है जो बाड़मेर में है और उसमें राजस्थान गवर्नमेंट की हेल्प से हो रहा है, जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट का स्टेक जितना मुझे पता है, आई थिंक 24% है। ओके। अच्छा, आपने ये कभी ऑब्जर्व किया है कि पेट्रोल का प्राइस और डीजल के प्राइस में डिफरेंस क्यों होता है? सर मैंने ऑब्जर्व किया है कि डिफरेंस होता है, लाइक पर जितना मैं सोच पा रही हूँ उसमें एक्साइज ड्यूटी एंड वैट के अकॉर्डिंग डिफरेंस होता होगा, आई थिंक। तो एक्साइज ड्यूटी और वैट हम अलग अलग क्यों लगाते हैं, दोनों में सेम लगा दें? इसका मुझे आइडिया नहीं है सर। हम्म, ठीक है। आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? आप तो सारे इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मेरे फेवरेट हैं लाइक मशीन, नेटवर्क, पावर सिस्टम, कंट्रोल भी है, और मैं सिग्नल के क्वेश्चंस भी कर लेती हूँ। अच्छा। हम्म, यस। ओके। सिग्नल के क्वेश्चन, नेटवर्क के क्वेश्चन, और मशीन को मैं प्रायोरिटी देती हूँ, उसके बाद नेटवर्क, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम एंड सिग्नल भी कर लेती हूँ। मशीन को प्रायोरिटी देते हैं आप? यस सर। अच्छा, चलिए, मेरे को एक मेरे लैप वाउंड मशीन है, डीसी मशीन, लैप वाउंड। ओके सर, लैब ठीक वाउंड। है। हाँ, यस सर। उसका ईएमएफ इंड्यूस पर सर्किट कितना होता है? EMF induced, it can be like 250 volt, 220 volt. नहीं, उसके उसकी फॉर्म में होता है। मान लिया फ्लक्स पर पोल है फाई, पी पोल है, ओके, जेड उसका फॉर्मूला नंबर। सर। हाँ, पर पोल ओके, कितना होगा पर सर्किट? एन 5 आरपीएम। ZN P/60A। मैं पूछ रहा हूँ, ये तो उसकी ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला हो गया। मैं पर सर्किट पूछ रहा हूँ कितना होता है। सॉरी सर। अच्छा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं लैप वाउंड में? सर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं लेफ्ट वाइंडिंग में। तो कितना होगा, आप बताओ। लाइक 2 पोल और 4 पोल। एक वस्तु पी हो गया ना, पी से पी कैंसिल हो जाएगा। A इक्वल्स टू P है। फाइव जेड एन आपने पी सर बाई। पैरेलल पाथ पूछे है ना। नहीं, पैरेलल पाथ नहीं पूछा मैंने, पैरेलल पाथ में कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है ओके 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 बताया तो वही था, ठीक बताया था, उसमें भी वो उतना ही होता है जो आपने बताया, 60 तो जनरल हो गया। ठीक है, ओके ओके चलो। नाउ चंद्रा सर विल टेक फॉर टेक्निकल। ओके। ओके चंद्रा सर, ओवर टू यू। Thank you, sir. Hello, Manisha. How are you? I'm fine, sir. Good afternoon, sir. And you said that your favorite subjects are machines, controls, signals, and power systems, right? Yes, sir. What is synchronous condenser? Synchronous condenser, basically the synchronous motor operating and lagging power factor. Okay.
What is it? सर आपकी आवाज नहीं आई. आवाज नहीं आ रही है. Now it is clear. Yes sir. What is the difference between synchronous condenser and synchronous motor? Sir, synchronous condenser operating at no load at lagging power factor. You mean to say synchronous motor power factor is fixed, synchronous condenser power factor is fixed at lagging, you're saying? Yes sir. Why it is lagging? Synchronous condenser power factor is lagging, you're saying. Why it is so? Sorry sir, no idea. Okay. Fine. So you said that as you are overexciting the synchronous motor. What is the purpose of going for overexcitation? ओवर एक्साइटेशन हम तब करते हैं जब हमको लाइक और एक्साइट लोड को पावर चाहिए होती है. Which power? रिएक्टिव पावर. Reactive power. Okay. So when the motor is supplying reactive power to the load under overexcited condition, what will be the power factor of the motor? Power factor will be leading. Leading. Okay. What is the power factor of a synchronous generator which is underexcited? Synchronous leading. Leading. Yes. Okay. Fine. Yeah. For the induction generator, for the induction machine to work as induction generator, what will be the value of general value of slip required? Slip will be less than 0. You mean to say negative? Yes sir, negative. Okay. So the slip formula is S is equal to NS minus NR by NS. For the slip to be negative, definitely NR should be more than NS. Yes sir. So let's take a situation. I have an induction machine. I'm rotating it. I'm giving some mechanical energy to that induction machine. I'm rotating it, but I'm not rotating with the speed more than synchronous speed. I'm rotating it with help of some mechanical input, but I'm rotating it less than synchronous speed. Does it will behave as induction generator, or the machine will generate any power? ये सर इट डिपेंड्स लाइक ये डिपेंड करेगा कि किस फ्रीक्वेंसी से हम सप्लाई दे रहे हैं स्टार्टर को. अगर हम फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे तो उसकी सिंक्रोनस स्पीड ही कम हो जाएगी, तो इससे रोटर की. My question is about induction generator. We are not giving any supply. It must work as a generator. Okay. What is a generator? We must give mechanical input, then it is going to produce electrical output. So my question is, you said that the machine we must rotate the machine more than synchronous speed. Okay. If I rotate with mechanical input my induction generator with a less than synchronous speed, does it will behave like induction generator or not? Not. Okay. Then if it is not behaving, I'm giving some mechanical input. What about the mechanical input? I'm giving some mechanical input. Where it's going? Sorry, sir. Okay. Fine. Yeah. What are the various tests those are performed on transformer? No load test, short circuit test, Sumner test, Hopkinson's test. Okay. What is Hopkinson test and why it is performed on transformer? सर इसका मुझे आइडिया नहीं है. Okay. Fine. What is power factor, ma? Sir, power factor? Yes. What is power factor? Okay, sir. पावर फैक्टर बेसिकली हमको बताता है कि जैसे अपने पास
अपेरेंट पावर है तो उसमें से कितनी पावर यूटिलाइज हो गई एज एक्टिव पावर, और मोस्टली appliances are connected in parallel, so we take voltage reference and then it will take, ये हमको बताएगा कि करंट कितना लीड कर रही है, कितना लैग कर रही है, और हम इसको इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट को भी कंपेयर कर सकते हैं रेजिस्टिव लोड से. Okay, what is the significance of power factor? Suppose if the power factor is low, then what's the problem for the system? सर फिर इसमें हमको रिएक्टिव पावर की डिमांड ज्यादा होगी, एंड अगर पावर फैक्टर लो है तो हमको करंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, उससे वोल्टेज लॉसेस भी ज्यादा होंगे एंड वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, तो आउटपुट में वोल्टेज कम मिलेगा. Okay, fine. You said that all our appliances are connected in parallel. Why all our appliances are connected in parallel? Why can't we connect in series? क्योंकि सर जैसे घरों में सारे अप्लायंसेस पैरेलल में इसलिए कनेक्ट होती हैं कि एक खराब हो जाए तो दूसरे पे कोई फर्क ना पड़े, अगर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो एक खराब होने से पूरा सिस्टम रुक जाएगा. Okay. Fine. What is conservator in a transformer? कंजर्वेटर एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर में काम आता है. ऑयल ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट होता है तो ऑयल गर्म होता है और फिर वो एक्सपेंड होता है, तो जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो कंजर्वेटर में आ जाएगा, तो उसके लिए. Okay. What is breather of a transformer? ब्रीदर बेसिकली जो एयर होगी उसको पास करने के लिए होगा. Okay. We are using silica gel in the breather. What is the purpose of silica gel to use in breather? सर फॉर मॉइस्चर What को एब्जॉर्ब करने के लिए. What happens if moisture enters into the transformer? सर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर शायद मैं जितना सोच पा रही हूँ उसमें फिर बबल बन जाएंगे और उससे कुछ प्रॉब्लम होगी, लाइक ऑयल और मॉइस्चर मिक्स नहीं होना चाहिए, और उसमें कोरोजन का भी प्रॉब्लम आएगा फिर. Okay. Fine. Yeah. So what is the difference between mesh and loop? मैश एंड लूप सर. Yes. Sir, in my opinion, they are same. Then why two names? I don't know, sir. Okay. What is resonance? रेजोनेंस तब होता है जब रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सेम हो जाता है, तो जो सर्किट होता है वो टोटल रजिस्टिव हो जाता है. See, imagine you are teaching resonance to the students, those who don't know inductive reactance and capacitive reactance and all. What is the basic thing that is happening in resonance? What does it mean by resonance? Suppose, see, resonance not only occurs in electrical equipments, in mechanical equipments also resonance will occur. What you understood by the meaning of resonance, by the word resonance? Sir, जब हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर पाएंगे, क्योंकि रेजोनेंस पे पूरा हमको मैक्सिमम करंट मिलेगी. Okay, that is the outcome of resonance you're saying, but what is resonance was my question. Okay, fine. What is God ring? What is God ring that is used in power system? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ. गार्ड Okay. रिंग
गार्डनिंग प्रोटेक्शन में यूज होती है Okay, फ्रॉम सर्जेस, protection of what? From surges. ट्रांसमिशन लाइन. Okay. What do you mean by surges of transmission line? सर्जेस लाइक लाइटनिंग सर्जेस, जब लाइटनिंग होती है तो. Then what is God wire? My question was about God ring, not God wire. सर लाइक लाइटनिंग होएगी तो उन सर्जेस को बाईपास कर देगा. So where we are keeping that, what you are saying, that one, where we are going to keep to protect our transmission line from surges? Ground. On ground we are keeping. सर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता. Okay, fine. So tell me, what is the order of a system? Order. Order of a system. Which system, sir? Any system. How to define the order? I'm not asking the value. What you understood by order? You say second order system, third order system, fourth order system. What does it exactly mean by a second order system? More precisely, the question is what you understood. What does it mean by a second order system? Sir, highest power of the element of the characteristic equations. What element? Highest power of the element you are saying. Which element? Like s ki power 2 why, plus why 2s plus 1, then. Yeah, why we are taking the highest power of s as the order? Sir, I don't know. Okay. What is a dynamic system? Sir, the system which can vary with time. System which can vary with respect to time. Can you give one example for dynamic system? Sorry, sir. Okay, fine. What is a linear system? Sir, can I give equation? Yeah, you can. Not equation, just you can explain what is a linear system. Sorry, sir. Okay, fine. Let me give you feedback, Manisha. I asked almost some 20 questions I asked. Let me discuss one by one. Okay. Okay, yeah. Sir. Is synchronous condenser, as yes, you will correct answer. That is an overexcited synchronous motor for the purpose of delivering reactive power to the grid or to the load or any equipment which requires reactive power is called as a synchronous condenser. The power factor of synchronous condenser is leading. Okay, and there will be no load on synchronous condenser. Okay, mechanical load is not there on synchronous condenser. That is the first question. Induction generator, yes. See, for the induction machine to act as an induction generator, the slip must be negative. If we rotate the induction generator at the speed less than synchronous speed, power will not be generated. Okay. Yes. See, next question was various tests on transformer. So please go through those tests. Okay, there are several tests. Like, okay, and you said Hopkinson test and all. Please verify whether the test belongs to that transformer or not, and what does it mean exactly. Yeah, and after that I ask what is power factor. Yes, you given correct answer. See, why appliances are connected in parallel. Yes, you given correct answer. Conservator of the transformer, you given correct answer. Breather, you given correct answer. See, if moisture enters into the oil of transformer oil must act like an insulator. Okay, it must have good dielectric properties. When moisture enters, the oil will lose its dielectric properties, and no more it is going to be an insulator after some time. Not exactly by the time it enters, the moisture enters. So slowly oil will get deteriorated. Okay, that's why we are keeping a silica gel which is going to absorb that moisture from the air. Okay, yes. Mesh and loop both are not same. See, a loop
may have a further closed path in that, but a mesh is not going to have any further closed path in that. So mesh is the closed path in which further no closed path exists. Okay, sir. Okay, all meshes are loops, but all loops are not meshes. See, loop means a closed path, that's all. A loop is a closed path. Where you start, again, you have to end there. Wherever you're taking that is valid. But a mesh is a closed path in which there should not be any further closed path. Okay? Okay, sir. Then what is a resonance? So basically the resonance is if the input frequency is equal to system natural frequency, every system in this world is having its own natural frequency. If the input frequency matches with the natural frequency of that particular system, that particular condition is called as resonance. Okay, God ring and God wire both are different. God ring is used to improve the string efficiency of overhead line insulators. Yes, You remember? sir, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा था उस टाइम string efficiency. Okay, to improve string efficiency, we are keeping God ring. Yes, See, to protect our transmission line from lightning strokes, earth wire or shield wire or guard wire is used, that is kept on the top of the transmission tower throughout the transmission, so that lightning enters on the top of the conducting body. That will enter as the guard wire is the top conducting body on the transmission tower. This lightning will enter into that, and that guard wire is connected to tower is connected to ground. That lightning stroke will be bypassed to the ground via this tower. It is not going to enter into the transmission line. Suppose if it enters into the transmission line, that will enter into our equipment will damage. Okay, yeah. Order of a system. See, the number of energy storage elements. Suppose if you take a purely resistive network, order is 0. There is no energy storage element in that. If you take an RL network, RL, one energy storage element is there. It is a first order system. If you take RLC or LC, there are 2 energy storage elements. It is a second order system. Okay, that is the order. What you said is correct. That is, that is mathematically correct. That is highest power of S in the characteristic equation is taken as order. But why we are taking highest power of S? Why we get S? If there is a derivative or integration in our KVL or KCL equation, we are going to get that S term. Okay. Derivatives or integrations you get in the KVL or KCL equation if you have energy storage element. Suppose if all are resistances, what is the voltage I into R, I into R, I into R? What is the current? V by R, no integration, no derivative. Suppose if there is an inductor, di by dt you will get. What is the voltage across inductor? L di by dt. If you apply Laplace, that di by dt is going to give one S term. Yes, sir. Got it? Yes, sir. So what is a dynamic system? A system which is having energy storage elements is called as dynamic system, not which is varying with respect to time. Okay. I didn't ask you what is time variant system. I didn't ask you what is a time variant system. If the parameters of the system are varying with respect to time, that is called as time variant system. Okay. Okay, sir. Then I asked what is a linear system? If a system follows or satisfies both superposition and homogeneity, then that system is said to be linear. It has to satisfy both superposition and homogeneity, then that system is said to be linear. Okay. So when is your interview, Manisha? 2nd Feb. Okay. So please go through technical details once again, at least the basics. Okay. Okay. And over to Vijender sir. Yes, Manisha. Yes, sir. मेरा एक सजेशन है, जब आपने बोला आप ये एज ए फ्रीलांसर, तो आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को उसमें इंट्रोड्यूस करना, ठीक है ना, कि आई यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम और नेटवर्क, जो 1-2 है, सारा नहीं बोलना, नहीं तो दे विल आस्क, ठीक है ना? ओके सर. हाँ, और ये थोड़ा सा आपको करंट न्यूज के बारे में जरूर देखना है. जो एचआर का क्वेश्चंस आते हैं वो करंट से रिलेटेड ही होते हैं. G20 क्या हुआ, ठीक है ना? अभी इंडिया में हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन इवन बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में चल रहा है, ठीक है? ठीक है. तो उसके बारे में
पता होना चाहिए। करंट की न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर HR इंटरव्यू, वेदर sir. दे आर रिलेटेड टू योर कंपनी से भी रिलेटेड हो सकती है और वैसे भी हो सकती है, ठीक है। ठीक है। तो ऑयल सेक्टर्स के जो उस HPCL का एक इंटरव्यू का एक वो सर्कुलेट किया हुआ ऐप में, सॉरी ग्रुप में, उसको आप एक बार जरूर पढ़ लेना। HPCL से रिलेटेड जो Yes, sir. चीजें आपके दिमाग में रहेंगी उनको रखना है, ऐसा जरूरी नहीं है सारी चीजें आपके दिमाग में रखनी है, ठीक है, लेकिन वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। Okay, sir. कॉन्फिडेंस वाइज और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, मुझे लगता है कि उस हिसाब से ठीक है, आप कहीं से घबराए नहीं, वेदर क्वेश्चन गलत हुए या सही हुए, ठीक है। लेकिन दूसरा एक चीज और एडवाइस करना चाहूंगा, जब आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उसमें बोल सकते हैं कि सर मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में, मे आई ट्राई, तो उसको उसके बाद आंसर करें। Okay, sir. पहले आप आंसर कर दे रहे हैं फिर आप बोल रहे हैं कि सर पता नहीं शायद यही होगा, ठीक है ना, तो वो उसमें थोड़ा सा निगेटिव जाता है, ठीक है। ठीक है सर। जैसे ठीक है सर। गार्ड वायर में आप फंस गए थे, गार्ड रिंग गार्ड वायर में, तो दोनों उल्टा बता रहे थे आप, ठीक है ना। सर आपको हिंट्स भी दे रहे थे कि मैं गार्ड वायर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं गार्ड रिंग के बारे में पूछ रहा हूँ, तब भी आप कि सर्च सर प्रोटेक्शन एक्चुअली चले सर मुझे गए। याद आ भी गया था, फिर मुझे वहां पे टैकल करना नहीं आ रहा था कि अब वापस से मैं कैसे जाऊं कि लाइक। हम्म, तो उसमें बोल के सॉरी सर आई फॉरगेट इट, आई नाउ रिकॉल इट कि it is ये होता है, ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा सब्जेक्ट नहीं करना, अगर आपको वो करना है तो अच्छे से मशीन नेटवर्क और पावर सिस्टम को ठीक से एक बार वो करिए, तो उन्हीं पे आपको कंसंट्रेट करना है। HR में करंट की न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनको पता होना चाहिए, ठीक है। और ओके कॉन्फिडेंस सर। चेक करते हैं, वो कॉन्फिडेंस है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सर मैं 16 पास आउट हूँ तो फिर वो, और मेरे देखो को प्रोजेक्ट का भी आइडिया नहीं है। यहाँ तो प्रोजेक्ट के बारे में बताना नहीं है, बोल देना कि सर आई हैव नॉट रीड अबाउट द प्रोजेक्ट बिकॉज आई पास आउट 2016, ठीक है ना। और उसमें घबराना नहीं है, उसको अपने कॉन्फिडेंस से बताना, ठीक है सर नहीं हुआ नहीं हुआ, आई एम मैं अभी मैं इसके लिए आई हूँ, ये करना है। अब उसमें घबराने को आपको वो करने की कोशिश करेंगे, इंटीमेट मतलब आपको घबराने की आपको वो करने की कोशिश करेंगे कि सब लोग प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, आप में घबराना नहीं। आपकी एज है और HPCL ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आप सिलेक्ट हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। सिंपल इस चीज को, ठीक है अब है तो है गैप, उसको आप किसी तरीके से फिल नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसमें आपको ना सर। आपको कॉन्फिडेंस दिखाना कि सर यस सर आई पास फ्रॉम 2016 but I was trying and along with I am doing the freelancing work for teaching, जिससे मैं financially independent हूँ और प्रिपरेशन मेरा स्टिल कंटिन्यू, ठीक है। और अभी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, आई एम हेयर फॉर इंटरव्यू, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। चलो, ओके, गुड लक मनीषा, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर।